Sarthak, can you hear me? Hi Shivani, how are you? Yeah, I can hear you well. I am good. How are you? I'm doing great. I see you on the webinar after long. Like that's great. That's But true. last month, our last webinar was also like last month, December, Yeah. and then January. So we are It, keeping up with the synergy that we created. absolutely. And the thing is, there have been so many events. We just launched a new project. So everything has been so busy that unfortunately I didn't do justice with the community. But now I have. Product. Oh, you got it. Yeah. I myself am, trying to implement it at my workplace for better automation because previously what happened was that thumb impression wala, if everybody can relate to, you come, you put that thumb and then you get that attendance mark. So with this we want to make things easy, and then price is obviously a variant that what paying there is like not even comparable to what we have bought this. And that's lovely, and I can't wait to see how you like the product, of course. And for everyone who's confused what we're talking about, don't worry, we will be giving a little a brief about this product, what it is. How many of you from the audience actually know about the payroll product, or have you seen it or tried it? All you Petpooja customers. And Kishan, you have written you have already enrolled for ONDC. It takes time depending on how or what the status is in your city. It's very important about that. If it is active, if it has delivery and network partners, that is when your restaurant can get onboarded and active on ONDC in your city. So you will have to check with your people for that. And meanwhile, हम ये बात कर रहे थे, how many of you actually know about the Petpooja payroll product? Because we are going to wait for another 3 minutes. Just write a yes or no in the chat box if you know it or not. And if Sarthak, you can show the product again, just the package. I think you're on mute. Sarthak, you're on mute. This is the package that you get when you order it. So I've got two of these. One is being used in the other office, and this we are yet to like make it operational in this office. But then great product. Like I have tried it, and then the build quality, the price, and the smoothness is something that you can comment on. That's lovely, and I see on the chat a lot of people do know it. Now, how many of you have started using it, or you would want to see a demo of it? Please do let me know because I would love to have a feedback from the community. आपको कैसा लग रहा है? Yesterday only, Shivani, I was sitting with a very prestigious brand of Delhi in South Delhi. So we were just talking about the webinar and everything. So we came on to Petpooja. Like I just asked them, what's your honest opinion about Petpooja as a pause and everything. So this guy is into business since last 20 years now, more than 20 years probably. When the pause culture started, when brands came in, the pause annual charges of pause was somewhere around 35-40,000 annually, 33,000. Many people who were present in the webinar would also know that because they're also paid for it. They've also paid for it, right? When Petpooja came, Petpooja created a convenience for everybody. Like everybody from a small household cloud kitchen to a brand to a cafe to clubs that we manage today are using Petpooja because it's a convenience, right? And I, Similarly, yeah, the payroll part, the device that we get installed, then the after service, after sales, renewals, all of that hassle. Now Paid Pujas come up with another convenience, which is easy, which everybody can, push in their current operations and can get the best returns. no, agreed. I think our pricing and support is something we're very proud of always. And it's the same team developing and doing the end and front and end work. So I'm very excited to show everyone the product after this webinar too. Mohan, I'm going to send you and DM you a thing. You can just message me all those details and I'll get your demo sorted as soon as the webinar is over. With that, Sarthak, I am going to start today's webinar. Welcome everyone to the first webinar of 2024 with the Foodpreneur community. I'm your host Shivani and I wish you all a very, very happy new year.
Today's webinar has been curated with a lot of thought process of how every restaurateur should not just start but visualize their 2024. This is exactly what Sarthak had told me, that we don't just want to do a webinar on let's do just one topic. We want to make a guideline for everyone who goes forward with entire the entire let's say 2024. क्या ट्रेंड्स आने वाले हैं, आपको क्या क्या चीजें अभी right now you need to get sorted with all the things you guys have been procrastinating, be it your Zomato images, description, be it your marketing, be it your packaging, be it a lot of things. What you need to do now is exactly with the guide that Sarthak is going to be talking about today. I don't know, Sarthak, did you start this? Okay. I request all the audience members to please not touch around the links. Don't worry, we are going to send an entire recording of this webinar on YouTube and to all your WhatsApp channels at the end of the day. With this, Sarthak, I'm going to give you the stage to explain and present us today's webinar, which is going to be your restaurant operations guide for 2024. For everyone, please do take out your pen and paper, because I am not kidding. This webinar is going to be extremely useful because I went through it right now before half an hour. And after the webinar, my team and I with Sarthak are going to give you a guideline, a crust of this webinar, which you can also go through in case आपको SOP समझना है, कुछ भी समझना है. But now you can just concentrate, and I'm going to give the floor to Sarthak. And Sarthak, why don't you take it forward and please present it? Yeah. So hi guys. For the new people who have joined the webinar for the first time, my name is Sarthak. I am a restaurant business consultant. I have a company by the name Tech Taste Foods. We are currently managing and working with active 1,000+ brands pan India, and by pan India, tier 1, tier 2 places as well. I see there are many people in the chat box who are from tier 2 places. And I also see people who are actually joining the webinar from South Africa. Uh, so that's like great. The whole idea about this community, about these webinars and all the topics that we come up with every time, we try to make it new and we try to make it useful, right? Because we know 12 p.m. in the day, you start your day and we want you to sit here for an hour. So we know. So what happens, Shivani, what I've observed in the previous webinars is that there are many people who cannot join at this hour because the industry that we are in, they work late. They are available till 2, 3 a.m. in the morning. So they start their day a little late. But with the recordings that we push on YouTube, they call us from that. Like we saw that webinar and it was useful. So with today's topic that we are coming up with and we're going to talk about right now is a complete restaurant planning for the year 2024 that we are in right now. 2022, 2023 was a little tight. 2023 was a little loose, but 2022 was a little tight because just after COVID, restaurants were started, they were starting again. The people were coming out again. People started to trust again on food deliveries, on the food quality and standards. But 2024 is something which is free and we are back full-fledged with the maximum bandwidth that we can right now. Our whole agenda for today's webinar is to plan 2024 in a way wherein we do not do the same goof ups that we have done in the year 2023. Also, guys, I talk in Hindi and English both. So, अगर किसी को भी ऐसा लगता है at any point that you're not able to understand what I speak, or you're not able to relate, or you're not able to understand English or a particular language, you can just drop in the chat box. I'll be opening, okay, Shri. So I'll be talking in both Hindi and English. ये जो webinar है, right? I see people are voting for Hindi. Good. Okay. So any which ways, I'm going to talk in both the languages, so that will be easy for all of you. So Restaurant Operations Guide 2024 edition. The whole idea is that you guys get a complete plan कि क्या क्या करना है जिससे आपका रेस्टोरेंट सक्सेसफुल हो, प्रॉफिटेबल हो. सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल में ना बहुत फर्क है. सक्सेसफुल हम उसको बोलते हैं कि हम लोगों ने देखा यार आज ये एक आउटलेट था एंड down the line 6 months this outlet has expanded to, for say, 12 outlets. We say okay, successful, but we do not know if the outlet expansion is from their own money, own bootstrapped money that they're pushing in as an investment, or that expansion is out of profitability कि एक स्टोर से 12 स्टोर कर लिया, इतना प्रॉफिटेबल हो गया. So successful and profitable are two different words and have a thin line in restaurant industry, I would say. We want to focus on success but profitability more.
क्यों? क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो वेरिएबल कॉस्ट है, दे आर ऑल स्टैंडिंग. वी वांट समथिंग व्हिच इज प्रॉफिटेबल, राइट? कि आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ यू आर अर्निंग मनी आउट ऑफ द बिजनेस. We can take the slide here, Shivani, if you can do that for me. Yeah. Who are we? I just told you guys we are food consultants managing more than 1,000 brands pan India. We help managing your online aggregators. Swiggy and Zomato पे आपकी sales को align करना, business लेके आना, sales boost करना, आपके campaigns track करना, promotions manage करना, everything that helps you to push your business towards a profitable side, make it successful as well. We do that for you. We drive complete revenue, we drive complete sales for you, starting from a small cloud kitchen to big brand cafe, clubs, restaurant, fine dine. We do all of it. We help you manage your SOPs, but that's something that we do in elaboration in the webinar. My agenda every time that I come to webinar is कि मैं वो सब कुछ दे दूं जो मुझे पता है आप लोगों को, because this is a particular community. See, there are times when we get 350 people joining in, there are times that we get 50 people joining in. That does not matter. What matters is कि जिसको जरूरत है एक right time पे right knowledge की, we want to deliver that. So every time when I come to the webinar, I want to give in my best so that you know how to take it ahead, right? So we can just take it, take the slides ahead. We're going to talk about 4 major points that we have added in the presentation that you see: sales techniques, SOPs, staff management tips, marketing secrets. So what I try to do with the presentation is I try to add as much as content, but I know that you guys cannot read it in the same minutes that I speak. So preferably you listen what I speak and you relate to the presentation. We can give the points after the webinar as well to you guys. Yeah, sales techniques, SOPs, staff management tips, and marketing secrets. Sales techniques, we're going to talk about how you can manage. So, firstly, understand what is sales and how you can be consistent on that sales and how you can achieve that sales. After that, we're going to talk about standard operating procedures or the processes कि आप अपने रेस्टोरेंट के स्टैंडर्ड्स को ऑटोमेट करके उसको स्टैंडर्डाइज कैसे करें. जैसे मान लीजिए एक आज एक रेस्टोरेंट चल रहा है जिसमें एक 10 लोगों का स्टाफ है, उसमें प्रॉपर किचन ऑपरेशंस चल रहे हैं, सब कुछ है, बट अब वो एक रेस्टोरेंट अगर 10 होना चाहता है, या एक रेस्टोरेंट का जो ओनर है ही प्लान्स आई डोंट वांट टू सिट टू द रेस्टोरेंट एवरी डे, आई नीड टू फोकस समवेयर एल्स एज वेल, ये ऑपरेशन सीमलेसली कैसे चले, उसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत पड़ती है. वी गोना टॉक अबाउट दैट एज वेल. देन वी हैव स्टाफ मैनेजमेंट टिप्स. Staff, I would say, is the backbone of restaurant industry and is the most respectable and most important profile of the restaurant industry. More than who's investing, staff is more important. So I have not added any content for that. We want to talk about it. Me and Shivani would add our points on it, because this is something which we get to hear every day from our people, that staff is a problem, help with staff, automate nahi ho raha. Then we're going to talk about marketing secrets. We can take up the slide ahead, Shivani. Yeah, this is something which is out of the topic, which I've added on slide 1, that is 2024 key mantras. First is product market fit realization. Second is, if opening a new store, invest on location. Third is, prefer hybrid over cloud. I'll explain every point of this. Third is, prefer hybrid model over cloud kitchen model. Fourth is, restaurant industry is going to face big boom now this year. Fifth is, passion and profession should be aligned. Don't start kitchen from home. If you want to do, start it on a self-delivery, not in an aggregator ecosystem. Sixth is, business is for profits and it takes time. That clarity. Sixth, fixed costing, variable costing, SOP, staff management, marketing pipeline, all should be automated. And last, stay positive and motivated throughout. ये जो 2024 के कुछ की मंत्रास मैंने डाले हैं, सिंगल लाइनर्स. सो ये जो presentation that you guys see, 91 people that you presentation in a restaurant last day, there was a photo shoot happening, there was complete SOP management happening. I was sitting there with my laptop writing the content for you guys. So this is the content that I write out of experience and that I do every day. That's my job. Product market fit realization. आपका प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो you think कि एक specific market को target करना चाहिए, but due to any reason, any circumstances, you fit that product in any other market. For example, you talk about a very plush, very high society, tier 1 market, जहां पे आपको पता है you can sell very good Mediterranean, Lebanese, European, Eurasian, Pan Asian cuisine, right? But there you go with
the cuisine which they cannot relate to or they don't want to put their time into. And then take a market which is a little different market, wherein the culture is very not very Western and very Indian, and people would love to go for Indian food. They would come for fulfilling Indian full course meals, and you go there and you start giving them continental cuisines, Mediterranean cuisines, they will not align. आप जो खाना बेच रहे हो उसकी एक स्पेसिफिक मार्केट होनी चाहिए. आप समोसों को एक ऐसी मार्केट में नहीं बेच सकते जहां पे सारे यूरोपियन और पैन एशियन कैफेज है. आप पैन एशियन को, यूरेशियन खाने को, आप सुशी को एक ऐसी मार्केट में नहीं बेच सकते जहां पे लोग समोसा, जलेबी और इंडियन खाना खाने आ रहे हैं. एग्जाम्पल. सो प्रोडक्ट और मार्केट का अलाइनमेंट बहुत जरूरी होता है. सेकेंड, इफ ओपनिंग अ न्यू स्टोर, इन्वेस्ट ऑन लोकेशन. लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में, दे प्लान टू सेव ऑन रेंटल्स, कि कम रेंट वाली जगह पे जाते हैं, एक बार चलेगा, उसके बाद वील कम ऑन टू द बेटर प्लेस और अ बेटर लोकेशन. गाइस, डू नॉट डू दैट. दिस इज अ बिग टाइम मिस्टेक, आई वुड से, एंड आउट ऑफ एक्सपीरियंस. रीजन इज, location is something that isn't, so you, for the market that you want to get for your business, for your brand, आप उसके लिए इन्वेस्ट करते हो. लोकेशन इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू इन्वेस्ट अपॉन. आपकी लोकेशन ही आपको वो क्राउड दे देगी. इफ यू आर गोइंग इनटू अ टियर 1 ब्यूटीफुल फुल फ्लेजेड रनिंग मार्केट, वहां पे कंपटीशन भी हो सकता है. वहां पे आपका ब्रांड अगर चलेगा तो आपके पास एक ऑटोमेटिकली क्लाइंटेलिक मार्केट शेयर आएगा, हु विल कम फॉर पॉइंट. यूएसपी क्या है? लोकेशन पे इन्वेस्ट करो. लोकेशन अच्छी ढूंढो जहां पे मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो. डोंट अज्यूम यू सेव ऑन रेंटल्स एंड देन यू विल मेक अ मार्केट फॉर योरसेल्फ. यू विल स्पेंड इन मार्केटिंग एनी विच वेज. अगर 6 महीने बिजनेस नहीं चलेगा, आप उतना ही बर्न कर दोगे जितना आप इन्वेस्ट कर सकते थे लोकेशन पे, और आपको बिजनेस आ सकता था. थर्ड, प्रेफर हाइब्रिड ओवर क्लाउड किचन मॉडल. रीजन, हाइब्रिड मॉडल में आप कैश भी केयर टेक करते हो, आप क्लाउड किचन भी चला सकते हो. सेम किचन, सेम फिक्स कॉस्टिंग पे, डाइन इन कस्टमर भी केटर हो रहा है, सेम फिक्स कॉस्टिंग, सेम खर्चों पे आपका ऑनलाइन मल्टीपल ब्रांड्स भी चल सकते हैं. सुपर ब्रांड बनाओ. आई टेल एवरीबडी, मेक योर ब्रांड, मेक वन ब्रांड अ सुपर ब्रांड. What? But after one brand, you need to have secondary brands that is going to give you business. Restaurant industry is gonna good like get and see that big fame in this year. Reason is market is full-fledged open, people are out, people are eating, people are ordering. Zomato itself as a startup has stated themselves profitable. Many new startups that are coming in is gonna flourish in 2024 that we see over the years. Passion and profession should be aligned. So I meet many people who are great chefs, they have a great hand on in the kitchen, in the recipes, in everything that they do inside the kitchen operations, because they have been trained with in it. They have aligned themselves over the years for a kitchen. But now when they think that, okay, my passion is to cook and I will start a business, and when they start a business, they start doing mistakes in selecting the type of business. They'll either open a very big cafe in a market which does not fits in, or they'll not run it in a way that a business should be run, because they're doing it out of passion. Don't mix that. I see so many people who who are good with cooking, they want to start business. They feel that, okay, it's my passion to cook, so I started. Do it right, but do it in the business way, in the way a business should be run, and not in a way where you align, you boom your passion. आपको अपना बिजनेस को बिजनेस के तरीके से ही करना पड़ेगा. Business is for profits and it takes time. Over the years, what I see is that लोग जैसे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आते हैं, they start cribbing कि business में profit नहीं आ रहा, पैसे नहीं बच रहे, I am just giving salaries, I'm just doing fixed costing, I'm just doing rentals. ये सब कुछ हो रहा है. And this is something that is wrong. Business takes time. Restaurant business takes clarity, right? So the whole point and agenda is that you give it time. After this, fixed costings, variable costings, SOPs, staff management, marketing pipeline, all should be automated. आप अपने operations को जितना automate करोगे, that will be better for you. आपकी अगर फिक्स कॉस्टिंग्स एक बार ऑटोमेट हो गई, दिस इज योर रेंटल, दिस इज योर सैलरीज, दिस इज योर यूटिलिटी बिल्स, आपकी वेरिएबल कॉस्टिंग, वेंडर मैनेजमेंट सॉर्ट हो गया. चिकन इससे आएगा, ग्रोसरी इससे आएगी, पैकेजिंग इससे आएगी, इस प्राइस पे आएगी, फॉर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, टिल द टाइम देयर इज नो इन्फ्लेशन, नो फ्लक्चुएशन, योर वेरिएबल कॉस्टिंग्स आर सॉर्टेड. देन द एसओपीज, किचन कैसे ऑपरेट करेगा, स्टाफ कैसे ऑपरेट करेगा, पैकेजिंग कैसे होगी, कॉस्टिंग क्या होगी, डिलीवरी कैसे होगी, मार्केटिंग कैसे होगी, स्टफ स्टैंडर्डाइज्ड है. तो अगर ये सब ऑटोमेटेड है, तो आप एक सेटअप के बाद दूसरा सेटअप बना सकते हो.
And the last, stay positive and motivated throughout. You need to be, very always that charming, always that positive with the business. I prefer that. I do that because every day when I come to my job, every day when I go to restaurants, to my office, I always tell myself this is a new day, this is a new year. So everybody call a new year. I say every day is a new year for you. You just need to change that momentum of your brain. It's like that. We can go to the next slide, Shivani. Just give me a second, guys. I need to put a charger on. I forgot to add it. Just give me a second. I hope all of you are paying attention to this thing. In case there are any questions, you can really put it on the chat box. I'm taking down all the questions, and give me a thumbs up if you are with Sarthak for now. Yeah, I'm Sarthak? back. Yes. Yeah. So the whole idea is that jo bhi questions hai, whatever doubts you've got, we will take that. And as I say, anybody who comes from Petpooja calls us, tells us we saw a webinar, there is no consulting fee that we charge to others, only for this set of community. Okay. Second slide is how to deal with expenses and recover losses. Control food costing. This is for the 2023 goof up that you or we and everybody has been doing or has done. Negotiate on online promotions. Don't overburn. Don't think कि मैं 5 लाख 10 लाख की एड चलाऊ 2 लाख की एड चलाऊ 1 लाख की एड चलाऊ सेटअप के हिसाब से 50,000 की एड चलाऊ. डोंट डू दैट. रिटर्न नहीं आ रहा, रुक जाओ. रिड्यूस्ड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट. आपको एक कस्टमर करना है. Stop spending over on getting discounts, promotions, commissions, ads, everything that we call. So आपकी जो नेट सेल्स की फूड कॉस्टिंग होनी चाहिए वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए. ग्रॉस सेल्स की फूड कॉस्टिंग सबकी कंट्रोल्ड होती है क्योंकि उसका फिगर बड़ा होता है. Everybody comes to me and tells me my food costing is 30%. But when I bring it down to the net sales, कि भाई आपने 10 लाख का बिजनेस किया, you did a business of 10 lakhs after deducting discounts, promotions, commissions, ads, everything. आपका जो अमाउंट बच गया वो बच गया 4 लाख का. तो जो आपकी 10 लाख पे 30% फूड कॉस्टिंग आ रही थी, which is 3 lakhs. Now, this 3 lakh food costing is costing for a net sales of 4 lakhs or say 5 lakhs. तो आपकी फूड कॉस्टिंग चली गई 55-60% पे. वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता. कंट्रोल इट. स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग. आपके सुपर ब्रांड की एटलीस्ट पैकेजिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. एक अच्छा फोटोशूट होना जरूरी है. जैसा दिखेगा वैसा बिकेगा. एज वी हैव बीन लिसनिंग ओवर इयर्स, ओवर जनरेशंस. खाना अच्छा दिखाओ, अच्छा बिकेगा. मेन्यू को डिस्क्रिप्टिव बनाओ. नॉट एवरीबडी वुड नो व्हाट अ लेबनीज प्लैटर वुड बी और व्हाट अ एस्परगस सुशी वुड बी और व्हाट अ लेक्सा वुड बी और व्हाट इज इन योर थाली. आपकी एक प्रीमियम थाली में क्या है, आपके पैन एशियन पैड थाई नूडल में क्या है. nobody will know that. तो your menu should be descriptive. फिक्स्ड कॉस्ट को कम करो. जो सैलरीज जो ओवर टाइम ज्यादा जा रहे हैं, व्हाट आई सी मेनी ओनर्स डू दिस मिस्टेक. स्टाफ ने बोला आज ओवर टाइम है, पैसे चले गए. एंड देन व्हेन दिस हैबिट कम इनटू एवरी रूटीन, तो फिर वो पैसे जाने शुरू हो जाते हैं हर चीज में. ज्यादा गैस लग रही है, ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है, हर जगह सब कुछ ज्यादा जा रहा है. Control that, right? We can take to the next slide. Also, I just saw that somebody's typing that we need to do a two-way communication after every slide, 5 minutes. So Puneet, hi Puneet. The only thing that we don't prefer that is because our agenda is कि एक बारी हम सब कुछ डिस्कस कर ले, हम आपको सब कुछ बता दे. We don't want कोई पॉइंट रह जाए. After that we have ample time. I have complete day for you guys. को वेबिनार के बाद भी you have my number. I'll put in my number. You call me up. We can talk about everything. First topic, sales techniques, boost your sales. Also, Puneet, I talk a little extra. So, मैं वैसे ही ज्यादा बोलता हूँ. I take a little time extra than other speakers probably. So the idea is पहले इसको खत्म करेंगे, फिर Q&A, and then we can come back on a call. Right. Sales techniques, boost your sales. Your sales is an outcome of the supply demand chain ecosystem. Plan your supply according to the demand. I was sitting with a client yesterday, and so she's a lady. I asked her, मैंने कहा I have a webinar tomorrow. I'm just writing a content for that. So she was like, okay, क्या लिख रहे हो आप? She's very excited always. She sat with me and she was like, sales के बारे में लिख रहे हो? मैंने कहा हाँ हाँ, तो हम ऐसा करेंगे ना, जो हमने अपने आउटलेट पे लिखा वो सब लिख दो इसमें, कि ऐसा मेन्यू, ऐसी ब्रांडिंग, ऐसी पैकेजिंग, ऐसा सब कुछ XYZ. I was so happy for that. At least, so my idea is to educate as well.
ये जो मैंने पहली लाइन लिखी है ना, दिस लाइन इज लिटिल टेक्निकली जार्गन्ड लाइन, ये लाइन थोड़ी सी टेक्निकल है कि एक सप्लाई और एक डिमांड इकोसिस्टम में अगर आपका प्रोडक्ट, आपकी सप्लाई डिमांड के साथ मिलती है तो आप सेल्स कर पा रहे हो। आप एक ऐसी मार्केट में जा रहे हो विच इज अ वेरी नॉर्थ इंडियन पंजाबी डोमिनेटेड मार्केट एंड यू ओपन अ नॉर्थ इंडियन आउटलेट देयर, यू स्टार्ट सर्विंग ग्रेट बटर चिकन, ग्रेट पनीर बटर मसाला, दाल मखनी विद लच्छा पराठा, एवरीथिंग। लोग बैठ बैठ के खाएंगे, भर भर के आएंगे। सो दैट इज योर सप्लाई डिमांड चेन इकोसिस्टम के हिसाब से अलाइनमेंट। Second, location, product, packaging, branding and marketing is equal to sales. Location, जैसे I told you, product अच्छा होना चाहिए, packaging और plating, how beautiful you design your plate when you serve your food to the dine-in customer. Then branding and then marketing is equal to sales. Your check marks for offline sales. So I have given two categories, offline sales and online sales. We're going to talk about offline sales first because I like it. It has 40-50% profit margin. लोग बहुत पैसे बनाते हैं offline sales में। पहला, your product and location should match. Product should match the demand. Abhi I explained it to you guys. Second, work more on talk of the gram slash market. इस लाइन का मतलब क्या है? Talk of the gram as in you open Instagram or Facebook today and you just type the letter food, or you just type the Swiggy or Zomato or Cloud Kitchen or Dine-in, anything, restaurant. आपको बड़े सारे रील्स वीडियोस आने लग जाएंगी। एंड व्हाट वी फील इज, अगर आपका एक भी कंटेंट वीडियो वायरल हो जाता है, विच एवरीबॉडी नो, और इफ यू आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया विद द plating, with the ambience, with the kitchen, how your staff works, how, what is the mentality of the restaurant owner, why he started, everything has a story. And if that story can be published to the gram or in the market, people talk about it. अरे तुमने सुना क्या, their दाल मखनी ना हांडी is famous, और तुमने सुना क्या, their sushi is different, or did you guys heard about or saw that reel wherein this guy was putting a handi in a tandoor and taking it back and it was looking so delicious. This is talk of the gram on market. ये होना बहुत जरूरी है. If डाइन इन के अंदर ऑफलाइन सेल्स में यू हैव दिस पावर ऑफ मार्केट, आपका बिजनेस आ जाएगा. थर्ड, योर सोशल मीडिया शुड बी अग्रेसिवली बूस्टेड विद कंटेंट दैट रिलेट्स टू योर ब्रांड, जैसे अभी मैंने बताया. फोर्थ, योर प्लेटिंग एंड सर्विंग शुड बी ऑन पॉइंट, इन ट्रेंड, इजी. Staff training should be well versed for them to easily communicate with the customer. For offline dining sales, this is most important. Relate with me when I say you go to a restaurant, आप गए, आपने वेटर को बुलाया, वेटर कम्स, स्टूवर्ड कम्स, और आप उससे पूछते हो आपके मेन्यू में व्हाट इज द बेस्ट दैट यू हैव इन योर मेन्यू, और वो आपको सामने से बोलता है हमारा सब कुछ ही अच्छा है. अरे that item, that menu has 200 items, you cannot eat everything, you cannot try everything. That answer is abrupt, that answer does not match what you are looking forward to. Now इमेजिन सिचुएशन, आप उससे पूछते हो कि मैं क्या ऑर्डर करूं, एंड ही टेल्स यू सर वेज में, नॉन वेज में, सर वेज में, स्टार्टर्स में, मेन कोर्स में हमारा पनीर बहुत अच्छा है, पनीर में मखनी और लबाबदार बहुत अच्छा है. तो आपको एक क्लियरिटी मिल गई कि मैं क्या ऑर्डर कर सकता हूं. एंड व्हेन यू टॉक टू दैट वेटर, यू गेट दैट एम्पैथी फॉर द ब्रांड कि वाओ यार, हाउ गुड दिस ब्रांड इज वर्किंग. So this is what staff training should be. Their grooming, their dressing sense, everything. I see many restaurant cafes, what they do, their staff is not well groomed, unki dressing is not good. Yeah, you should do that, must. This is something which, so when I, for example, take a situation, I come to the webinar with a t-shirts on and just sitting ऐसे आपके सामने, this is not something me, or eat drink a glass of water and just telling you ऐसे कर लो. Now when I come in front of you, well dressed, well groomed, you would also like to see me. This is the power of dressing sense and grooming in restaurant industry. Involve Swiggy Zomato from the kitchen. Dine in maybe, don't think कि आप dine in setup में से एक proper cafe में से Swiggy Zomato नहीं चला सकते. आप same kitchen में से multiple brand चला के उसको hybrid में convert कर दो, so that business आए. For example, your outlet is by the name outlet name is ABC, right? I'll not name any outlet. Outlet name is ABC. And आप उस kitchen में से multiple brands चला रहे हो, XYZ. आपका revenue बढ़ रहा है. You open your revenue windows. After that, keep menu diverse but crisp. Keep menu diverse. Again, reason is मेन्यू आपको बड़ा करना है, आपके पास मल्टी क्विजीन है, आप रखो, बट क्रिस्प. एक पनीर की 25 वैरायटी नहीं रखनी है, एक पनीर की 5 वैरायटी, एक दाल की 5 वैरायटी, एक चाइनीज की इतनी वैरायटी. सो मेक इट क्रिस्प बट डाइवर्सिफाइड ऑन द क्विजीन. योर मार्केटिंग प्लान शुड बी ऑल सेट टू कैप्चर मैक्सिमम न्यू मार्केट शेयर. एक नया मार्केट शेयर लाने के लिए आपका क्या प्लान है, कितनी एड्स चलानी है, क्या कैंपेन चलाने हैं, किस इन्फ्लुएंसर को रीच आउट करना है, ये सब कुछ अलाइन होना चाहिए. वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड.
Guys, this was for offline sales. Now we're going to talk about online sales. ऑनलाइन सेल्स में आपको अगर सेल्स बूस्ट करती है तो आपको मैनेजमेंट सबसे पहले जरूरी है. फर्स्ट इज स्विगी जोमैटो हैज डिडक्शन. स्विगी पैसे काटता है, जोमैटो पैसे काटता है. 40 to 50% will be deducted on day one. You should be clear beforehand for it. Plan your menu accordingly. आपकी चीज, you know that your dal cost you 60 rupees at home and you want to sell it at 100 rupees on a dine-in or offline or 150 rupees for example or 200 rupees. तो ऑनलाइन में उसकी प्राइसिंग में आप एडिशन कर दो. 200 रुपए आपको चाहिए, पुट द प्राइस एज समवेयर 320-330 रुपीज, बिकॉज आफ्टर डिडक्शंस आपको वो 200 रुपए मिल जाएंगे. इट्स लाइक दैट. Your online portfolio, your online menu portfolio should be set right. आपकी, for example, your menu has a gravy item or a main course item. It should have the quantity mentioned that it can serve 1 to 2 or it is in a 500 ml container. स्टैकिंग ठीक होनी चाहिए. स्टार्टर्स, एपेटाइजर्स ऊपर, उसके बाद इफ यू हैव समथिंग व्हिच यू नीड टू फोकस ऑन और you want to promote, put that. After that, main course. After that, breads, rice, acquaintments, add-ons, everything, all of that. Pictures हर आइटम की अलाइन होनी चाहिए. इफ योर आइटम हैज अ पिक्चर, that's a brownie point for you. कि यार out when somebody is ऑर्डरिंग फ्रॉम स्विगी एंड जोमैटो, वो भी देखता है कि आउटलेट कितना काम कर रहा है. अगर एक अच्छी पिक्चर लगी हुई है, assumption इज पैकेजिंग भी अच्छी आएगी. नेक्स्ट assumption इज क्वालिटी अच्छी आएगी. नेक्स्ट assumption इज क्वांटिटी भी अच्छी आएगी. दिस इज द पावर ऑफ अ पिक्चर एंड अ फोटोशूट. डिस्क्रिप्शन होने जरूरी है, जैसे मैंने भी बताया. Focus more on aggregator marketing than social media marketing. For online sales, I do not suggest social media so much क्योंकि आप लोगों की visibility नहीं होती है. For cloud kitchen, dark kitchen, we are talking here. आप लोगों की विजिबिलिटी उतनी नहीं होती है, तो इफ यू गेट टू सी सम वीडियोस टुडे कि सोशल मीडिया चला लो, सोशल मीडिया प्लान ले लो, 10,000 रुपीज में सोशल मीडिया के इतने पोस्ट, ये वो, यू डोंट नीड दैट. नोबडी, you are yourself a customer. How many cloud kitchens do you follow on Instagram? If you are not a restaurant owner, you are a customer, you don't do that. I don't follow. For example, I'm a customer and I'll not follow what a cloud kitchen Pune is doing. Why would I want to see that? Because that does not interest me, right? सोशल मीडिया क्लाउड किचन के लिए थोड़ा सा इफेक्टिव कम होता है, उससे ज्यादा एग्रीगेटर मार्केटिंग है. एग्रीगेटर मार्केटिंग इज स्विगी जोमैटो मार्केटिंग. स्विगी जोमैटो पे क्या एड्स चल रही है, क्या कैंपेन चल रहा है, आप किस लिस्टिंग के अंदर हो, आप कब दिख रहे हो, पीक आवर्स में आप दिख रहे हो नहीं दिख रहे हो. दिस इज व्हाट एग्रीगेटर मार्केटिंग इज. सीजनल मेन्यू शुड बी पुश्ड. आपको पता है विंटर इज कमिंग, नॉर्थ इंडियन आउटलेट है, स्टार्ट एडिंग टू द मेन्यू. डोंट चेंज द मेन्यू, ऐड टू द मेन्यू. पुट गाजर का हलवा, पुट दाल का हलवा, put different gulab jamun, put something in the menu which makes the customer feel that this outlet is really trending and up to date, right? I have brands जो photoshoot change कर देते हैं. They have set photoshoot. Christmas, New Year's time आएगा, the background of the photoshoot will be all white and red and blue, something that gives a snowy feel. It's like that. So aggregator marketing पे ज्यादा focus करो, better than social media for a cloud kitchen and dark kitchen. Social media, so seasonal menu push karo, told you guys. After that, your packaging and serving should be on point and in trend. Packaging अच्छी होनी चाहिए. Swiggy Zomato का riders आएंगे, they are well trained to take an order, receive an order and deliver it. But then at times, maximum times I would say, they'll come, they'll take the packet and they'll just leave. अब वो पैकेट उल्टा जा रहा है, सीधा जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है, nobody cares for that. Customer cares. And Swiggy will refund or Zomato will refund क्योंकि अगर कंप्लेंट आएगी तो. But what happens in all of this mediation, कस्टमर ने कंप्लेन करी, स्विगी जोमैटो ने रिफंड कर दिया, ब्रांड की वैल्यू खत्म हो गई. उसको लगा यार ये ब्रांड को परवाह ही नहीं है, आई एम पेइंग 500 रुपीज, ये ब्रांड को पता नहीं है कि पैकेजिंग कैसे करनी है. सो पैकेजिंग इज समथिंग विच शुड बी strong built, which should be decent. Don't make it too flashy, don't invest on the packaging, but then packaging is, don't invest too much on the packaging, but the packaging should be strong. कि यार अगर वो ऐसे ऐसे कैसे भी जा रहा है, इट इज कंटेन्ड, इट इज नॉट फ्लोइंग अवे. फूड कॉस्टिंग शुड बी कंट्रोल्ड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन हैंड. क्लाउड किचन के अंदर सबसे बड़ा डिलेमा, डिल्यूजन, मिथ इज कि इसके अंदर फूड कॉस्टिंग कम हो जाती है. पता नहीं किसने ऐसा बोला है मार्केट के अंदर. आई डोंट फील दैट. आई वर्क विद more than 2000 cloud kitchens today, but never have I ever felt that cloud kitchen की food costing कम होती है. क्यों कम होती है? salaries, if you want to deliver good food, आप एक अच्छा शेफ नहीं रखोगे. आप एक, अगर आपको कम टाइम में अच्छा खाना निकालना, आप एक अच्छी और प्रॉपर सेट ऑफ टीम नहीं रखोगे. आपको हाइजीन चाहिए, आप बड़ी किचन नहीं लोगे, आप फिर भी रेंटल्स दोगे, फिर भी सैलरीज दोगे, फिर भी यूटिलिटीज आएंगी, अच्छा क्वालिटी खाना दोगे, सेम रॉ मटेरियल जाएगा. वेयर इज द कॉस्टिंग्स? सेम एज ऑफ अ डाइन इन मॉडल. तभी I said in the day on that 2024 key mantras,
prefer hybrid over a cloud kitchen. But then if you're already in a cloud kitchen, control food costings, see how much should be is how much is going where, और वो कितना कंट्रोल हो सकता है. Super brand plus secondary brand should be onboarded. For example, your super brand is uh, uh, ABC एग्जाम्पल. एंड अब एबीसी में आपने पैकेजिंग भी दी हुई है, सोशल मीडिया भी दिया हुआ है, प्रमोशंस भी चल रहे हैं, बट उसके बाद अगर मैं एबीसी के नीचे सबऑर्डिनेट ब्रांड्स बना दूं, जैसे दा फॉर एग्जांपल स्टार्टर्स का एक ब्रांड, बर्गर एंड कॉन्टिनेंटल का एक ब्रांड, चाइनीज का एक ब्रांड इन द सेम किचन, तो मेरे रेवेन्यू सोर्सेज बढ़ जाते हैं. वी कैन फोकस ऑन दैट इन अ क्लाउड किचन. एंड क्लाउड किचन को एक या दो या तीन ब्रांड से मत चलाओ. स्टार्ट रन अ क्लाउड किचन फ्रॉम मल्टीपल ब्रांड्स. सुपर ब्रांड्स बना लो, सुपर ब्रांड्स दो तीन चलेंगे, बट मल्टीपल ब्रांड जरूरी ज्यादा है. दैट विल मेक यू मनी एट द एंड ऑफ द डे. People do not like to pay multiple delivery fees. Next point of secondary brands. For example, me and you, four of us are sitting together, और मैंने बोला मुझे नॉर्थ इंडियन खाना है, और इसने बोला, एक मेरे फ्रेंड ने बोला उसको चाइनीज खाना है. Now my super brand is only catering North Indian, but my secondary brand is catering everything because I have Chinese in my kitchen as well. So वो कस्टमर उस आउटलेट पे जाएगा जो मल्टी क्विजीन डाइवर्सिफाइड मेन्यू दे रहा है. मैं वो कस्टमर दो दो डिलीवरी फीस नहीं पे करेगा. So it's like that. लास्ट, स्विगी जोमेटो एड शुड बी अलाइन्ड एट द राइट टाइम विद द राइट गोल एंड बजट सेटिंग. हम लोगों ने पहले एक पूरा वेबिनार लिया है एड्स के ऊपर कि आपको एड्स कब चालू करनी चाहिए. यू नो, आई गेट टू सी पीपल टुडे जो 2-2 लाख 3-3 लाख की एड्स महीने की बर्न कर रहे हैं, पे आउट 0 और 20%, 25%, 30%. This is not a payout. If you are not getting 55 to 56% of the payout or 50% of the payout, profitability नहीं आएगी. We can go to the next slide, Shwani. SOPs. What are SOPs? Why are these or their SOPs? In the most simple terms, SOP का मतलब होता है आपके जो भी प्रोसेसेस है रेस्टोरेंट के अंदर, वो अलाइन करना, उसको स्टैंडर्डाइज करना, राइट? तो ये आई थिंक देयर इज अ मैसेज इन द चैट बॉक्स. If anybody who has any query or who has any doubt in the last topic, you just type it down. We'll take the question again. No problem with that. एसओपीज क्या होती है? एसओपीज होती है आपके ऑपरेशंस को, आपके प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज करना. जैसे कि अगर एक खाना बन रहा है, फॉर एग्जांपल, एवरी डे यू नो दैट देयर इज अ सेट ऑफ प्रोसेस, अ किचन, हाउ अ किचन विल ओपन फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, हाउ अ किचन विल क्लोज. ओपनिंग से क्लोजिंग तक की सारी प्रोसेसेस को अगर आप ऑटोमेट कर पाते हो, अगर आप स्टैंडर्डाइज कर पाते हो, तो वो आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करता है. ये होती है एसओपीज. Few of the SOPs that we have mentioned is food preparation SOPs and handling. Next is kitchen SOP. A food preparation and handling के अंदर क्या क्या आ जाता है? Standard recipe making. That your recipes should be standardized. For example, today I say that I have one outlet, and 6 months down the line I want to make this one outlet to 5 outlets. I cannot personally go myself to every outlet and standardize everything. So what I'll do is I'll make a manual or a module जिसमें सारी recipes लिखी हुई है. वो रेसिपीज हमारे स्टाफ को एक बार ट्रेन कर देंगे, और ट्रेन करने के बाद दे देंगे. उसके बाद वही रेसिपी फॉलो होती रहेगी, होती रहेंगी, होती रहेंगी. इससे आपके टेस्ट की कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है. प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज करने से कंसिस्टेंसी आती है. व्हाई हल्दीराम्स इज अ बिग सक्सेस ऑफ इन इंडियन कम्युनिटी? रीजन इज स्टैंडर्डाइजेशन. आप हल्दीराम के छोले भटूरे नॉर्थ इंडिया में खाओ, आप वेस्ट में खाओ, आप साउथ में खाओ, आपको मिलेगा खाना सेम. यू गो टू अब्रॉड, यू ईट हल्दीराम, आपको सेम हल्दीराम मिलेगा. सो दिस इज द साइक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. आपके प्रोसेस ऑपरेशंस जितने ज्यादा स्टैंडर्डाइज होंगे, उतना आपको बेटर लगेगा. हर चीज को मैनुअल कर दो, डॉक्यूमेंट कर दो, रेसिपी की डॉक्यूमेंट कर दो, पैकेजिंग की डॉक्यूमेंटेशन कर दो, हैंडलिंग की डॉक्यूमेंटेशन कर दो, पैकेज कैसे होगा, सर्व कैसे होगा, उसको डॉक्यूमेंट कर दो, स्टोरेज कैसे होगा, ड्राई स्टोर, कोल्ड स्टोर कैसे होगा, डॉक्यूमेंट कर दो, कॉस्टिंग्स को डॉक्यूमेंट करो कि एक दाल, एक सब्जी, एक चाइनीज आइटम, एक स्टार्टर इतने प्राइस में ही बनना चाहिए. उसके बाद आपका किचन एसओपी आ गया, किचन प्रिपरेशन, किचन हाइजीन, किचन क्लोजिंग. मान लो आपने नया स्टोर खोला, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे एसओपी के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से, आई विल नीड 2 बर्नर्स और 5 बर्नर्स और 1 तंदूर और 5 चिमनीज और 2 ओवन. दैट सेट ऑफ क्लियरिटी शुड बी देयर किचन को रन करने के लिए, डाइन इन को रन करने के लिए. जब आप एक्सपेंशन की बात करते हो, देखो ये जो चीज है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस, ये उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों को एक ही स्टोर में काम करना और 6 और 8 महीने काम करके बंद कर देना है.
This is something that this is an investment of time, investment of energy, like what we are doing here right now in Petpooja webinar. See, Petpooja is great at selling pause, great at delivering solutions, bringing up new products. My company is giving results, but why do we do this webinar and sit here, try to give in, we prepare ourselves a week or 10 days before the webinar? Only and only reason is कि हमारी ये एक इन्वेस्टमेंट है आप लोगों को ये बताने में दैट देयर आर पीपल वर्किंग फॉर यू. सिमिलरली योर इन्वेस्टमेंट इज एसओपी, आपकी ऑपरेशन की स्टैंडर्डाइजेशन, कस्टमर को ये बताने में कि भाई आप इंडिया में कहीं भी हमारा खाना खाओगे आपको सेव मिलेगा. वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड शिवानी. आई एम ट्राइंग टू मेक इट लिटिल क्विक. कहीं भी अगर कुछ डाउट हो, यू वांट मी टू गो स्लो, यू कैन जस्ट टेल मी. नेक्स्ट इज परचेज एसओपी. वेरी गुड पॉइंट written by me. परचेज एसओपी के अंदर क्या आ जाता है? आपके वेंडर्स, आपकी स्टोरेज, आपका रॉ मटेरियल जो आ रहा है वो सेम ब्रांड का आ रहा है, सेम कंपनी से आ रहा है, और उनकी प्राइसिंग टिल द टाइम देयर इज नो फ्लक्चुएशन. परचेज एसओपी क्यों जरूरी होती है? फॉर एग्जांपल, आई एम सिटिंग एंड आई एम मेकिंग अ पास्ता और एनीथिंग एंड आई एम और अ बर्गर, एंड इन अ बर्गर आई एम यूजिंग मेयोनीज और चीज, एंड दैट मेयोनीज और चीज इज कमिंग फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड डेल मोंटे. And next day I bring something which comes from a different company, that is from Viva or that is from Fun Foods. Example I'm giving, just example, not naming anything. तो होता क्या है कि जो टेस्ट है ना वो रोज बदल रहा है आपकी क्वालिटी से, आपकी जिस कंपनी से सामान आ रहा है. उसके बाद आपके जो वेंडर्स है अगर वो अलाइंड और फिक्स्ड हो गए, दैट यू नो कि XYZ डिस्ट्रीब्यूटर से मेरा ये सारा सामान आएगा, तो आपका एक जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना मार्केट में जाके ढूंढना कि अब ये पकड़े, अब ये पकड़े, अब ये पकड़े, वो सब सॉर्ट हो जाएगा. परचेज एसओपी के अंदर आपकी वेंडर्स, आपकी प्राइसिंग, आपकी ब्रांड जिससे सामान आना है वो सब फिक्स्ड हो जाता है. यू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग. देन द डिजाइन एंड फर्नीचर, लीगल एंड लाइसेंसिंग एंड एग्रीमेंट्स. डिजाइन एंड फर्नीचर के अंदर क्या होता है कि दिस इज समथिंग विच ओनली डाइन इन पीपल कैन डू, बट क्लाउड किचन कैन ऑल्सो डू कि अपना किचन सेट करने के लिए. बट डिजाइन एंड फर्नीचर डाइन इन के लिए ज्यादा प्रेफरेबल होता है कि एक कस्टमर जब आपके आउटलेट में आता है तो उसको सबसे पहली चीज जो दिखती है वो होती है आपका इंटीरियर, कि आउटलेट बना कैसा हुआ है. तो अगर आपके इंटीरियर बहुत ज्यादा सिमिलर है हर लोकेशन पे, तो दैट मेक्स इट इजी फॉर द कस्टमर टू रिलेट. तो डिजाइन एंड फर्नीचर को स्टैंडर्डाइज कर दो कि रेस्टोरेंट इंटीरियर डिजाइन कैसा बनेगा, एलिवेशन कैसी बनेगी, बाहर से दिखेगा कैसे. एलिवेशन का मतलब होता है बाहर से कैसे दिख रहा है. इंटीरियर डिजाइन का मतलब क्या क्या हो गया, आपके टेबल चेयर, फ्लोरिंग, सीलिंग, वॉल्स, ये सब कैसी होगी. फिक्स फर्नीचर होना चाहिए. टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो देयर. टेक्नोलॉजी एसओपीज के अंदर क्या होता है, टेक्नोलॉजी के अंदर आपका पॉज कौन सा है, आपका रिकॉर्ड कीपिंग कैसे चल रहा है, आपकी ऑटोमेशन कैसे हो रही है. जैसे दिस इज टेक्नोलॉजी, दिस इज टेक्नोलॉजी. क्या आपको स्टाफ मैनेज करना है, स्टाफ कब आया, कब गया, कितनी देर रुका, ब्रेक कितनी देर का लिया, महीने के एंड में सैलरी कैसे लानी है. दिस इज टेक्नोलॉजी. स्टाफ आया, टैप किया, रिकॉर्ड हो गया. दिस इज टेक्नोलॉजी एट द बेस्ट प्राइस. दिस इज टेक्नोलॉजी व्हाट आई कॉल. पॉज टेक्नोलॉजी है. पेट पूजा, कितने ऑर्डर्स आए, कितने गए, मेन्यू ठीक करना है, फोटो ठीक करना है. दिस इज टेक्नोलॉजी. अगर ये सब कुछ अलाइंड है, किचन मतलब केडी सिस्टम, दैट जो किचन के अंदर स्क्रीन लग जाती है जब ऑर्डर आता है, स्टाफ को दिख जाता है, दैट सिस्टम, कि this is technology. Put technology and standardize it. Just today I am opening so many beautiful properties in the coming year. In the next month I'm opening 2 properties. उससे अगले महीने I'm opening another property in Delhi. So my working style is standardization, that I know that if I am doing this, then I'll replicate it to XYZ places. This is standardization. Then there is legal and licensing agreements. We can move to the next slide, Shivani. Marketing secrets, starting from the basics. Marketing is something जो बहुत लोग ना confuse कर जाते हैं. Marketing is an investment of funds, definitely, an investment of ideas and time. When I say time, funds ठीक है, funds से ज्यादा time important है, क्योंकि marketing is a time taking process. You cannot, so for example, now Apple brought this new phone today. Apple cannot market it in a day. It will take months on months, year on years to make it a brand or a super product, super selling product. That's marketing. So something that takes time, that takes money, is marketing in my way, in my understanding. We also do marketing for our brand. We give it time. For example, we run a new banner for our company. We'll wait for at least 2 months for it to give us that tentative desired results that we thought on day one.
So starting from the basics, your brand portfolio should be done right. आपका मेन्यू के अंदर क्या क्या आ गया? प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी. डिस्क्रिप्शन मतलब खाने के अंदर क्या क्या है. फॉर एग्जाम्पल, it's a dal makhni and you say, or a butter chicken, you would say a scrumptious, delicious buttery chicken in a marinated gravy, having a marinated tomato gravy, having onion and mint chutney accordingly, XYZ, whatever you can write, how crisp, how fried, how well steamed the product is, and how many people it can serve, something like that. If your menu has, that's an add-on brownie point pricing के साथ. योर प्रोडक्ट फोटोज, आप जो भी खाना बना रहे हो उसकी फोटो शूट करो, जरूरी करो. आर कंपनी हैज सेट, वट एवर ब्रांड वी वर्क टुडे, वी टेल देम मैंडेटरीज कि आपका कॉस्टिंग्स होनी चाहिए. अगर आपके पास कॉस्टिंग्स नहीं है, वी कैन नॉट वर्क विद यू. रेस्ट्रो, हम सर्विस कंपनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट रेस्ट्रो ओनर का डेडिकेशन होता है. रीजन फॉर दैट इज, अगर आपको आपकी कॉस्टिंग नहीं पता होगी, हम एक XYZ कॉस्टिंग पे खाना बेच देंगे, दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. So our mandatories are, you should know your food costings. If not, if you want help in that, we can help you with that. But आपको awareness होनी चाहिए. Product photoshoot होना चाहिए. नहीं है, awareness है, हम करवा देंगे. It's like that. And then stacking. Stacking मतलब क्या? Order of alignment. Starters, appetizers पहले, that main course कहाँ पे आना है, dessert कहाँ पे आना है, new items कहाँ पे आनी है, combos कहाँ पे आने हैं, all of this. Second, it's the impression first, then conversion. Customer has to see your brand first. So for that, make sure you are visible enough. Marketing is सबसे important. So in my very early, it's now been 9 years of me just in the marketing field, and very early, and 9 years specifically in the restaurant marketing, I would say. Very early years, somebody told me marketing is like poking. You need to poke the viewer that you are targeting at. उसको आपको पोक करना है कि भाई देख मैं ये कर रहा हूं, भाई देख मैं ये कर रहा हूं, भाई देख मैं ये कर रहा हूं. It's like that. So it's the impression first. Customer who's coming online or who's going through a market should see your brand. Your branding should be amazing. मतलब इतनी एस्थेटिक, इतनी प्यारी ब्रांडिंग करो, कस्टमर रुक ही ना पाए बाहर, वो फटाफट अंदर आ जाए. That's the power of branding. That's the power of impressions. So first, what happens is impressions. Then the impression is converted to something else. Customer को खाना अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, XYZ. First impression. बहुत अच्छी चीज आई जस्ट गॉट इन माय माइंड. बहुत लोग आजकल पढ़ते हैं जो क्लाउड किचन में है, फनल, कि फनल मेट्रिक क्या हुआ, कितने इंप्रेशन आए, कितने इंप्रेशन विजिट्स हुए, मेन्यू विजिट्स हुए, M2C, मेन्यू टू कार्ट क्या हुआ, मेन्यू टू चेकआउट क्या हुआ, XYZ. Guys, before understanding that data, understand what makes that data. What makes that data is effort of your brand. So impression is something which is important. After that, once you feel that you're visible enough, the agenda is to take the customer from impression to final checkout. अब इंप्रेशन से फाइनल चेकआउट में ले जाने के लिए क्या क्या आ जाएगा? मेन्यू, पिक्चर, प्राइसिंग, कैंपेन, डिस्काउंट, एवरीथिंग. दिस इज द प्रोसेस. इंप्रेशन से चेकआउट तक की जो जर्नी है वो आपको प्लान करनी पड़ती है कि मेरा आउटलेट दिखेगा कैसा, मेरा थंबनेल कैसा है. फॉर एग्जांपल, यूर अ प्योर वेज आउटलेट, तो योर प्योर वेज कुजीन टैगिंग शुड बी देयर. कुजीन टैगिंग आई जस्ट गॉट इट. कुजीन टैगिंग इज अ मस्ट. आप नॉर्थ इंडियन हो, टैग इट. You don't, what I see, people don't do cuisine tagging, people don't know about it only. आपके टैग्स क्या होने चाहिए, आपकी कॉस्ट फॉर टू एज इन की कितने का दो लोगों का खाना आप दे रहे हो, एवरेज जो आता है, अलाइड एवरीथिंग, योर ब्रांडिंग, थंबनेल, ब्रांड नेम टैग, कुजीन टैग, कॉस्ट फॉर टू, ये सब कुछ आना चाहिए. उसके बाद आप अंदर कस्टमर को लेके आओगे. उसके बाद ब्रांडिंग में डिस्काउंट्स क्या है, किस कैंपेन में आप देख रहे हो, ये सब कुछ आना चाहिए. Then fifth point, discounting and freebie is a very smart way to capture market share, as aggregator have created a very discount centric market, but you should know when to taper them. So discount and freebie is something. Freebie का मतलब ये नहीं कि आप कुछ फ्री में दे रहे हो. freebie का मतलब आप कस्टमर को एक टेस्ट दे रहे हो कि यार इन रिगार्ड कि तूने मुझसे 1000 रुपए का खाना खाया, आई एम जस्ट गिविंग यू अ गुलाब जामुन और अ ब्राउनी और अ सैलड और अ डेजर्ट और एन आइसक्रीम, एनीथिंग. That's freebie. Freebie is more, is not, I don't consider freebie as discount because वो आप कस्टमर को खाने के बाद दे रहे हो. I consider freebie as reward. Reward और discount में फर्क होता है. Reward is something that you do to regard your dear customer कि I am glad that you're my customer, this is for you. That's an appraisal. Discount is something जो आप कस्टमर को बेचने के लिए, बुलाने के लिए चलाते हो. तो डिस्काउंट सेंट्रिक मार्केट ऑनलाइन बन चुकी है, वेल एक्सेप्टेड और नॉट, बट इट इज लाइक दैट. टुडे इफ यू आर आल्सो अ कस्टमर, you tell me which, how many of you open Swiggy and search for outlet which do not have discount and you order without taking any discount.
As a customer, it's a mindset that has been created over 10 years now that आप डिस्काउंट से ही ऑर्डर करोगे. सो डिस्काउंट इन फ्रीबी इज अ स्मार्ट वे ऑफ कैप्चरिंग मार्केट. पर कब टेपर करना है? 120 रुपए ऑफ दे रहे हो, 120 को 100 पे ले आओ, 100 को 80 पे ले आओ, 80 को 60 पे ले आओ. फ्रीबी दे रहे हो, फ्रीबी पे ले 2 आइटम दे रहे हो, 1 आइटम करो. टेपर करना जरूरी है. कब टेपर करना है आपको पता होना चाहिए, राइट? Ads either on social media or aggregators should be run in the right way. Ads on social media for dine-in outlets, for cloud kitchen who want to do it, but aggregator पे होनी चाहिए. अब एड्स पे हम लोगों ने पूरा वेबिनार लिया हुआ है गाइस. ये जो टॉपिक्स है ना, समझो, मैं सिर्फ वही टॉपिक चूज करता हूँ, सिर्फ वही टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहता हूँ जो आपको पैसा बनाने में हेल्प करेंगे. I don't want to waste your time. I don't want to invest my time in something which is not profitable and not making money for you guys. हम यहाँ पे सारे, ये पूरी कम्युनिटी, इवन मी, यू, एवरीबडी सिटिंग हियर इज हियर टू मेक मनी एंड अवेयरनेस एंड नॉलेज, राइट? सो एड्स चलाने का तरीका है, एक सही टाइम है, एक राइट टाइम होता है एड चलाने का. एक एड चलाने का एक बजट निकाला जाता है, एक प्राइस होता है, उस प्राइस का आरओआई कंसिडर किया जाता है. एवरीथिंग दैट यू सी टुडे ऑन एड कि मेरे को लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, गाइस, इट इज बिकॉज आपको किसी पीओसी ने बोला गाइडेंस के हिसाब से 2 लाख की एड चलाओ, 50,000 की एड चलाओ, रिटर्न आ जाएगा. आपने चला दी, रिटर्न नहीं आया, खत्म, पैसे खत्म, फिनिश. You need to caretake of your discounting structure, your ad structure, your burn structure. कितना पैसा बर्न करना है राइट टाइम पे, किस स्लॉट में. आपको पता होना चाहिए ना आपका खाना किस टाइम पे बिक रहा है. आप अकॉर्डिंगली एड्स मैनेज कर सकते हो. इट इज सिंपल, नो रॉकेट साइंस. नहीं समझ आता, कॉन्टैक्ट अस, वील हेल्प यू विद दैट. 7th point, packaging should be something that makes them stop and click a picture first. The culture is of Instagram and Snapchat today. I also have to do that. I also get to do that with reels and everything. So agar for example now you bring up a packaging, so very very important that I have on my desk today is this book, Do Epic Shit. So Ankur Varku, if you know, he wrote a book by the name Do Epic Shit. Iski pack, I am not fond of reading too many books, I'll be very very honest. But what I was fond of is the how well the branding is, how well he has made his टॉपिक, हिज बुक नेम डिस्क्रिप्टिव. सो अगर आपका, और मेरा मन कर रहा है इसकी फोटो खींचने का, तो मैंने बुक ली. सिमिलरली अगर आप आउटलेट पे, रेस्टोरेंट पे आपकी खाने की पैकेजिंग सुंदर है, कस्टमर के घर पे खाना पहुंचेगा, वो सबसे पहले पिक्चर खींचेगा, वाओ. एंड इन डाइनिंग एज वेल, अगर आपकी प्लेटिंग सुंदर है तो वो सबसे पहले फोटो खींचेगा, वाओ. वो दैट रील यू गाइस सी, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ. इट्स लाइक दैट. You need to make sure कि आपका प्रोडक्ट दिख कैसा रहा है और बिक कैसा रहा है. That's in your hands. Then work on loyalty programs to bring the customer back every time. Loyalty program क्या है? कस्टमर आया, कुछ भी गलत हो गया, फॉर एग्जाम्पल डाइन इन में बैठे और कोई आइटम गलत चली गई, ठंडी चली गई, बर्न चली गई, स्टेल चली गई, ब्लैंड चली गई, एनीथिंग, आप कस्टमर को रिगार्ड कर दो. सर, आई स्मॉल जेस्चर फ्रॉम अस फॉर यू, apology gesture. Or if a customer is very happy, maza aa gaya yaar ki wow, when you find these kind of customers, go to them, talk to them, make a relation with them, change numbers, tell them that we're going to remind you with our offers, with anything XYZ, and then put them message on WhatsApp that we are doing something this for our regarded loyalty customers and everything like that. So this is something that you need to start from the basics की portfolio, impressions, then impression के बाद उसकी पूरी journey, visibility, discounting, freebie, ads, packaging, and loyalty. This is how you align your marketing plan. We can take this ahead, Shivani. Then how to set the budget for aggregator ads. This is something which I've discussed already, but then again, I'll do it for you. Budget is to be dedicated to decided by the brand owner, seeing the market and outlet level performance. You know that your brand is doing good in an hour from, for example, 7 to 9, or for example, 9 to 12, dinner or late night slot. You decide that, and then you particularly focus on that slot. उसके बाद you can check the slot dependency and see how much at what hours what we are targeting our customers. This is what I just said. आपको पता होना चाहिए आपका खाना किस टाइम पे बिक रहा है, उस टाइम पे अपनी एड्स चलाओ अपनी geographical location के हिसाब से. We can see our everyday sales and plan at what slot we need to push the maximum clicks. We must try to get the click price at the cheapest to capture a positive ROI. Talk to your POCs, whoever POC you have. If you cannot, we do that negotiation with you, with companies कि किस price पे ad चलनी चाहिए. We know that इस price पे return नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता. People run ads at 12 rupees, 14 rupees, 15 rupees, 25 rupees. Swiggy Zomato की I'm talking about. कोई return नहीं आने वाला guys.
कैसे रिटर्न आ जाएगा? आप जितना एड चलाओगे उसका ROI कितने टाइम्स आ रहा है? 1.5. दैट्स नॉट अ रिटर्न. So this you need to focus and push on. Next slide is open for questions. And staff management tips is something जो हम लोगों ने अभी इसमें नहीं कवर किया है. Staff management के ऊपर I'll just talk. Staff is something which is the backbone of the restaurant industry. आपके रेस्टोरेंट पे अगर आज स्टाफ नहीं आए, आप काम नहीं कर सकते हो, right? So staff is something that needs to be taken care of well, in a very pure and positive way. You need to regard them as well, you need to console them as well, you need to motivate them as well. On a good day, celebrate with them. Now what I tell my all clients and brand owners, आपके 100 orders plus जा रहे हैं, cut a cake with them, give everybody a free dessert, कि यार they feel obliged to work with you. Staff, they are humans as well. See, if they are working great for us, only then you can work. If खाना खिलाना is a work of karma, ये सबसे साफ और सबसे प्योर पवित्र काम है हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से, राइट? जितना खुशी से आपका स्टाफ खाना बनाएगा, उतना अच्छा वो खाना बन के आएगा. उसको मैनेज करने के तरीके होने चाहिए. हायरिंग, जब आप आई टेल, if you are working as a brand, if you have multiple stores, you need to have an HR in house. That HR is onboarding, talking professionally, HR होना जरूरी है. HR आपके लिए स्टाफ ऑनबोर्डिंग करेगी, जो भी शेफ है उनकी क्या हिस्ट्री रह चुकी है, क्या एक्सपीरियंस रह चुका है. उसके बाद once you feel that okay they are doing sorry for the chat box. I'll just come back to the questions, guys. I'm just ending the webinar with this PPT, and then we're going to come to the Q&A. So staff के अंदर अगर HR है, HR एक अच्छा स्टाफ ढूंढ के लाएगी, अच्छा शेफ लेके आएगी, उसके सबऑर्डिनेट्स लेके आएगी, उनकी सैलरीज फिक्स करेगी, सैलरी को टाइम पे देगी, सब कुछ. उसके बाद अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आप खुद अपना स्टाफ ढूंढ के ला रहे हो, तो उनकी सैलरीज बनाना, जो काम HR का होता है, या उनके डेज निकालना, उनके आवर्स स्लॉट करना, उसके लिए वी हैव सॉफ्टवेयर्स टुडे, वी हैव प्रोडक्ट्स टुडे, वी हैव पेट पूजा staff management product that we have in our Petpooja payroll today. So ये सब चीजें है मार्केट में. स्टाफ का होना बहुत जरूरी है, स्टाफ की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है. हायरिंग, ट्रेनिंग, एजुकेटिंग देम विद योर प्रोडक्ट, and then aligning them accordingly. That if there are overtimes, they'll work for you. Celebration times, they'll work for you. ये सब कुछ करना बहुत जरूरी है. With this, I think we are done with the presentation part. Now we can come to the question answers part. Also, with in the staff management part, particularly, I would want Shivani to give in some ideas, some suggestions कि कैसे और how we can automate this whole process, streamline this whole process. Also, we can talk about a little of Petpooja payroll. Not, guys, I am not being paid for this branding at all, है ना? तो the whole idea is कि यार आप समझो, if I use an Apple iPhone, I tell everybody use Apple iPhone. If I am using a product, I am telling everybody use this product. Simple as that. So this is कि हम, Shivani can give a little more brief why and how we can collaborate and push in this Petpooja payroll as a product and staff के ऊपर. First of all, thank you so much, Sarthak. It was a great webinar. I think you actually wrapped up a lot of things which are very important for understanding how to do and what to do this year. I will definitely take a payroll also to answer everyone's question. But I think we can also jump first into the questions that people started giving. उसके बाद किसी को भी questions अगर payroll के लिए होंगे, I would love to answer it. I think most of the questions have been around aggregators, Sarthak. So if you can take one of them right now from the chat box. Or if I'm just opening the chat box. Yeah, I'm just opening the chat box only. So one person had written, when we say payout, it's the amount credited by aggregator after deduction of discount, commission, ads, and that should be in the range of 50 to 55%. What is your thought in that? I'm just reading that question only. Yeah, I'll send it on the chat as well. It's from Rizwan Patel. When we say payout, it's amount credited by aggregator after deduction of discount, commission, ads, and 50-55%. Yes, Rizwan. That's what I meant. कि जो आपके अकाउंट में पे आउट आ रहा है वो 50% होना चाहिए आपकी सेल्स का. जैसे कि you know that for example you did a sales of 10 lakh rupees. उस 10 lakh rupees की सेल में 2 लाख में तो आपका डिस्काउंट ही चला गया.
उसके बाद उसके ऊपर आपकी कमीशन कटी, ठीक है, आपका हाई प्रायोरिटी कटा, तो जो पे आउट आता है वो सब डिडक्शन के बाद आता है। डिस्काउंटिंग, commissions and ads, this is the deduction of payout scheme from aggregators. Fair, Sarthak. Then we Sarthak, have this one more question by aggregators was something I've sent you. What should be the minimum ROI while running ads on Swiggy and Zomato? see, a What bad would you ROI say? is 1.5. A bad, I'd say I'd use the term bad. A bad ROI is 1.5x, or a good ROI is somewhere 3 to 4 times. अगर वो आ रहा है in the starting, see first 2 times, first 3 times ROI, guys, also a very important point. अगर ads का ROI पहली 1 या 2 बारी में नहीं आ रहा, don't start falling down कि अरे ये क्या हो गया. It is normal. आप समझो, ads is not a fixed return. Ads is something जो आप एक हिट एंड ट्रायल भी कर रहे हो कहीं ना लेमन लैंग्वेज. देखो हम कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग इट एट हिट एंड ट्रायल मेथड, तो पहली 1 2 बारी में रिटर्न कम आ सकता है, बट दैट डज नॉट मीन कि रिटर्न आएगा ही नहीं. अगर आप उसको स्मार्टली रन करोगे, पहली बारी 1 1.5 टाइम्स 1 और 1.5x रिटर्न आया, आरओआई आया, प्रॉब्लम नहीं है. दूसरी बारी दोबारा रन करो इन डिफरेंट वे. Target a right set of customer, target a right time slot, target a right time after making the mandatory changes to your brand. उसके बाद आप करो, क्या पता 3 to 4 times रिटर्न आ जाए, और अगर वो आ रहा है तो बहुत अच्छा है. I have an outlet, for example, he does a monthly sales of 28 lakhs and I run an ad of 40,000 for him only. So the whole idea is yes. So the whole idea is कि मैंने 40, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने 40,000 ऐड लेके 28 लाख का बिजनेस जनरेट कर लिया. इसका मतलब ये कि मैंने 40,000 ऐड रन करके एक ऐसा सेट ऑफ अमाउंट जनरेट किया जिसमें सिर्फ न्यू कस्टमर है. आउटलेट के कुछ रिपीट कस्टमर्स भी होते हैं, तो एड्स का टारगेट इज ओनली फॉर न्यू कस्टमर्स. यू कैन डू दैट फॉर यू. तो वो टारगेट सेटिंग करना और उसके बाद आरओआई निकालना बहुत इजी और बहुत आसान है. Fair, yeah. So I think someone has sent a question right now. If we can also go through that, Vijay. How do we bring in orders on non-peak hours from flying crust? Okay, I see. Okay, last question. The aggregators charge high amounts like 35-40%. And if I increase the price to accommodate that, the order number drop. What do I do? Okay, Vijay. आप समझो, ऑनलाइन मार्केट में व्हेन आई से स्विगी जोमेटो क्लाउड किचन के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी 10 से 15% की आएगी. इसका मतलब बहुत सिंपल है. इसका मतलब ये है, लेट्स टेक 100% मार्जिन, मतलब बफर. अब 100 में से आपको बोला कि 25% आपकी स्विगी कमीशन है, 27% आपकी जोमेटो की कमीशन है. उस पर 5% आपका टैक्स लग गया, 1.5 to 2% आपका गेटवे फीस लग गया, टीडीएस जीएसटी सब इंक्लूड कर चुके हैं हम लोग. ये जो नंबर जाता है चले जाता है 32-33% फिक्स्ड, जो जाना ही जाना है. इसके बाद आप बोलते हो मैं डिस्काउंट भी दूंगा. फॉर एग्जाम्पल, अब आपने डिस्काउंट दिया मान लो 120 रुपीज फ्रॉम योर पॉकेट, तो दैट सम्स अप टू समवेयर 24-25% ऑफ द ग्रॉस सेल्स. बड़े डिस्काउंट्स भी जा रहे होंगे, पार्टी जंबो ये जो कूपन है ये सब भी जा रहे होंगे, तो ये सब भी डिडक्ट हो रहे होंगे. तो 30-35% पे आप सीधा सीधा आ गए 50% पे. उसके बाद कुछ लोग चलाते हैं एड्स जो कि डिवास्टेट कर देते हैं उनके पूरे परसेंटेज साइकिल को 15% तक जाके 65%. पे आउट जो अकाउंट में आने वाला बच जाता है 35%, तो कभी प्रॉफिट नहीं होगा. तो इसलिए आपको डिस्काउंटिंग भी इस तरह से चलानी है, नेगोशिएट करके. आई ऑलवेज यूज द वर्ड नेगोशिएट, कि आप टॉक टू योर पीओसी, टॉक टू द टीम दैट यू वर्किंग विद, कि कैसे इस डिस्काउंट को कंट्रोल कर पाए, कि जो 25% डिस्काउंट जा रहा है 20% तक रहे, जो 15% ऐड चल रही है वो 8-7% तक चले, ताकि आपका 50% तक पे आउट आ पाए. उसके बाद अगर आप, कमिंग टू योर क्वेश्चन करेक्टली, अगर आप प्राइस बढ़ा देते हो, गाइस क्लाउड किचन के अंदर इंक्रीज द प्राइस ऑन योर कॉस्टिंग्स एंड नॉट अ सेल प्राइस. व्हाट यू गाइस डू इज, आपने सोचा कि मेरे कैश काउंटर पे, या मैं अगर कैश पे होता तो मैं ये दाल या ये सब्जी या ये आइटम 200 रुपए की बेचता, पर उसकी फूड कॉस्टिंग 60 रुपए है, 70 रुपए है. क्लाउड किचन के अंदर आप 60-70 रुपए पे इंक्रीमेंट करो, आप 200 रुपए पे इंक्रीमेंट मत करो. लोग क्या करते हैं, लोग सेलिंग प्राइस पे इंक्रीमेंट करना शुरू कर देते हैं. आई वांट टू सेल इट फॉर 200 रुपीज, सो नाउ स्विगी जोमेटो पे सेल इट फॉर 400 रुपीज. ऑर्डर्स आएंगे नहीं. आपको पता आपकी फूड कॉस्टिंग 70 रुपीज है. अब आपने एक उस पर मिनिमल मार्जिन पकड़ो कि 70 रुपीज पे आपने बोला कि मुझे 100 रुपीज चाहिए. आप 100 रुपीज की चीज अगर 220 की बेचोगे, प्रॉफिट मार्जिन नहीं गिरेंगे, आपका ऑर्डर नंबर नहीं गिरेगा. और अगर ऐसा कस्टमर है जो सिर्फ कम सस्ता ही ऑर्डर कर रहा है, तो आई वुड से बेटर वी डू चैरिटी देन वी डूइंग बिजनेस. Idea is to make money and not just giving in. Next question is from Yash Raj.
Please confirm the actual breakdown of gross sales like profit, cost, staff, fixed expenses, etc., where total monthly sales is 5 lakh rupees. Okay. तो अब मान के चलो कि यू आर डूइंग अ सेल्स ऑफ 5 लाख रुपीज विच इज अ ग्रॉस सेल्स, यशराज जैन। तो अब 5 लाख की सेल के अंदर मान के चलो आपने, आई वुड से 30% तो या 25% आपका कमीशन होगा जो यहां तक की सेल आई, 30% फॉर से। उसके बाद आपने बोला मेरा जो डिस्काउंटिंग है वो मैं 100-120 रुपीज दे रहा हूँ फॉर से, दैट इज 24 to 25% ऑफ ग्रॉस सेल्स ऑफ 5 लाख। तो 5 लाख में सबसे पहले 1,120,000 तो चला गया आपका डिस्काउंट्स में, तो वो सेल रह गई 4 लाख रुपए। अब मान लो आपने कुछ एड्स भी चलाई थी, सब कुछ किया था, जो भी XYZ। अब एड्स वाले ना हम लोग कमीशन काट लेते हैं, तो 4 लाख में आपका और 25% कमीशन कट गया, फॉर एग्जाम्पल लाख रुपए और चला गया, बचा 3 लाख रुपए। 3 लाख पे आपने एड चलाई, जो एड चली 15% की ऑफ द नेट सेल्स वॉज 4 लाख। तो नेट सेल्स का 4,50,000 की मान लो एड चला दिया आपने, तो वो रह गया 2.5, तो हम आ गए 2,50,000 पे। अब 2,50,000 सेल्स इज व्हाट यू विल गेट, और इससे थोड़ा कम ही आएगा यार, क्योंकि मैं तो फिर भी थोड़ा बेटर गुड डे में आपको नंबर्स बता रहा हूँ, डिडक्शन ज्यादा ही होते हैं। तो 5 लाख की सेल में जो पे आउट आएगा वो आएगा 220-230, और अगर आपने एड बहुत चलाएंगे तो पे आउट आएगा 170-180। तो दिस इज द होल पे आउट। So राइट। thank you so much, Sarthak, of course, for breaking down this entire matrix for everyone, and also for everyone who wants to understand not just your breakout of the payout, how to make it better. Because it's not just about understanding what you're doing, but also to make sure that you start earning profits. You can really reach out to Sarthak anytime. एक form circulate हो रहा है जो मैं उनकी team के साथ दे दूंगी. Sarthak will also put down his number. You can directly get in touch with him if you need anything. And Yashraj just asked one question. With this, we'll be answering last 1 or 2 questions because we are already 10 minutes over time. So you can also reach out to Sarthak directly. Yashraj ने पूछा है, when SOP is followed, how can I know whether it is being followed properly or not? This is one webinar that we did, I think, in 2023. Yeah. So we already done a webinar on this, Yashraj. You can just, I would say, subscribe to Petpooja's YouTube channel and see how we have been taking webinars. But then just to answer you for this question, अगर आपकी SOP फॉलो हो रही है और आपको चेक करना है कि वो फॉलो प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो आपको दिख जाएगा डे एंड पे रिटर्न से। आपने एक पेपर की पढ़ाई करी बहुत मेहनत से, कमरा बंद करके सुबह से रात तक, और मान लो उस पेपर का रिटर्न नहीं आया, आप पास नहीं हुए, तो उसका मतलब या तो हमने पढ़ाई कम करी थी या हमारा लक सही नहीं था। सिंपल। तो अगर आपकी SOP फॉलो हो रही है, आपको ऑपरेशन स्मूथ होते हुए दिख जाएंगे, आपको सेल्स अच्छी बढ़ती हुई दिख जाएंगी, सिंपल, you will see it in front of you. I see there's a question from Viraj Khubani. I'm Yeah. going to open in a location. The biggest fear of mine currently in the restaurant industry is real estate. The commercial rentals are so high these days. My question is, like in a location like GK2, the rental per square foot is very high. So what you say is that rental worth the footfall in that location. Okay, hi Viraj. I come from the same place, Delhi. Viraj, February 14, I'm opening a new cafe in Defense Colony. That's similar rental to GK2, Defense Colony main market, just opposite to Moeds. GK2, M block, N block, you need to decide. GK2, just say you've given the rental per square feet, I'll tell you. Rental for GK2 has square plot size of 1500 square feet. The rental for GK2 is somewhat 7 to 8 lakh rupees. So, आपको ये देखना है which spot you are getting in GK2. You can just contact me directly, Viraj. We can talk about this. This is something which I can personally see and help you. So GK2 is a beautiful market. M block, not N block. Only for guys, this is only for Viraj. We're talking about particular geographical locations. GK2 M block is a beautiful market. If you get a location, just we can talk about it. I can see personally, and then I can tell you better that this will run or not. I know everybody in I GK2. think, Sarthak, you have put down your number. I'll share it with you again if you can message me, and I'll just copy paste it again. Please feel free to reach out to Sarthak anytime, because any questions you have, even for shelf life, Rajiv, you can reach out to him. And with this, Sarthak, you are opening 2 more places which you actually didn't talk about. One is in Yeah, Rishikesh. so basically one is in Rishikesh, one is in Delhi Mehrauli, and the other one that I told just to Viraj, that is in Defense Colony in the month of February as well. That's a project, that's a very small cafe, beautiful cafe. The serving staff that we are involving in that cafe is deaf and mute. So when you will go into the restaurant, you will write down your order, staff will come, take the order. The restaurant is a very
I would say very peaceful, meditative kind of a concept, wherein you will just sit and you will feel how beautiful ambience can be made in the best price. So that's the new cafe. This is the So one in Rishikesh, or this is the one in Delhi? this is the one in Delhi. Okay. Rishikesh mein we are opening two floors basically. One is a rooftop cafe. That's a Greek styled cafe for all the tourists, because in Rishikesh there are many tourists that are coming in. And in Rishikesh, the down floor is for a residential market. That's a multi cuisine. That's a pure vegetarian outlet. Okay. So I think Yeah. Sarthak, one of the webinars we should definitely do in future, besides the one we have done right till now, because all of them have been great topics, is expansion. Should Yeah, you yeah, yeah, yeah. really expand, or should you go in India somewhere? What is the location? How do you select it? What do you tell I'll everyone? be Can you give a thumbs so up or something if that is a good topic you would want to do next month? I'll tell you. So, जैसे अभी विराज ने मुझसे पूछा for a location. So I'll be very honest. I love my job. मतलब I don't do it for money, guys. I love it like it's my first love of life, and I feel that it is gonna be always be my first love of life. So that's how desperately I love the job. So when I say that I'm desperate for my work, the love that I have, I always am on the ground. Every photo shoot that happens from our company, every new cafe, every new location, I am always on the ground. You'll see me. I was hunting a location in South Delhi only, Shivani, Delhi, and I met this guy. He was a broker guy, so he was giving me options at my office and everything. So I was sitting in a conference. We did not know about what I do correctly. So after everything was done, he was like, "Sir, I also have a cafe by the name XYZ. I know you boost sales and everything. So बात करेंगे हम इस पे." मैंने कहा ठीक है. So what happens is मैं ऐसा नहीं करता कि I sit in my office, use laptop. I am always on the ground. I know what to do because I know all the rentals. I know the cost acquisitions. I know the how to do everything in this sector at least, because I have been well trained for that. Which It's is like great, that. I think, for our audience because we also need someone to guide us in the right direction. And that is what this community is. And that is how we get the best experts for them who can help you guide for anything. So please reach out to Sarthak if you need anything from his Yeah, end. guys. Even it can be the stupidest thing if you want to ask. But trust me, Sarthak is more of a Petpooja fam now than just a expert who keeps updating us about the restaurant industry. So you can reach out to him anytime. And with this, we are going to give it a call and end this webinar. Thank you so much, Sarthak, for hosting such a great webinar. This was, I think, probably one of the only webinars that I did not say anything because I was also trying to absorb in all the new things that you were discussing about, and they were a lot. So don't worry, the webinar will be uploaded on YouTube and sent on our WhatsApp for everyone who wants to see it again. And हम लोग छोटा guide of SOPs and things भी send कर देंगे if you want to go and have a look again. And if you love the webinar, show us some love over here and you can fill in the form if you want to reach. Thank you so much. Sarthak, the stage is also all yours to just acknowledge the crowd and everyone. I'm already getting direct messages saying thank you and all of that. Guys, see, I'll be very, very honest. See, my agenda in the industry, in what I do, is not to make things my way. But I am little aggressive about work. Reason for that is, and I'm little straightforward. The reason about that is because I don't want to waste anybody's money. I don't want anybody to waste their money. सो होल आइडिया इज कि आप लोग अपने बिजनेस को अगर एक अच्छे तरीके से कर सकते हो, एंड आई ऑल्सो, सो इट्स लाइक आई वांट पीपल टू फ्लरिश. आई डोंट, जैसे होता ना व्हेन इन एन हलवाई शॉप यू टेक द मलाई आउट ऑफ द मिल्क, you take that upper skin out of the milk, that cream. So it's like that. The business needs good people. The business needs people who want to stick to it. The business needs people who want to be long term and not just quick income, quick outgoing, finish. Very true. So idea is कि अच्छा काम करना है, लंबा काम करना है and profitable काम करना है. As I said, successful and profitable has a very thin line. Successful दिख के लग सकता है. Ship can be very big, but you never know if the ship is sinking or if how. So you need to understand profitable क्या है और successful क्या है. We have many big startups who are successful but not profitable. So it's like that.
Thank you so much, Sarthak, for this amazing ending words. And thank you to everyone, our entire audience. You were such a great audience. Iti active audience, you kept messaging everyone. And if you have any other doubts about what Sarthak was talking about, if you want to reach out to Sarthak for his consultancy, you can directly just fill in the form or reach out on his number. Also, if you have any queries about Petpooja or you want to know about the new product of Petpooja, please reach out to me. I'm sure everyone has my number, and if not, you can just fill in the form. And after this webinar, I will definitely message you directly. Thank you so much, everyone. Have a Also, guys, I'll personally, sorry to cut you in between. no, Running no, bad no, with no, this. no, no. It's okay. I'll I'll myself make. I'm just making a video particularly for Petpooja's payroll. I'm just telling you. Yeah. I'll share my opinions so that everybody should know how I like it. And I don't take lies, I don't buy lies, I don't speak lies. Honest review of the product. Which, And which trust we me, know, honestly, personally, because we have also had a lot of back and forth with a couple of products. And then we sit down with all our experts to make sure that they love the product. And that's when we also launch it. And hence, we've launched it very recently. The costing, the demo, everything will be sorted. All you just need to do is just fill in the form and I'll get in touch. नहीं तो मुझे DM कर दीजिए, WhatsApp पे message कर दीजिए. I'll directly get in touch with you. And again, Sarthak, thank you so much for being such a great speaker, like always. And next month, we already have a topic sorted. And of course, for those who are here, before we leave, we have Ahar from the 7th to 11th of March, where, of course, Sarthak will also be coming. Our entire team will be coming. It's in Delhi. So it's still 2 months to go. It's the biggest expo in India for F&B. Every year it happens. Pete Puja's team has been going for over 7 years. So make sure you do come and meet us there. Our entire foodpreneur community, Pete Puja, everyone will be there. It's at Pragati Maidan. I will be sending an invite to everyone. I'm telling it right now so that you book your tickets if you're not from Delhi. And thank you so much. It's from 7th to 11th of March, Delhi. It's called Ahar. And it is guys, done you will get G20 हुआ uh, था उधर. Ahar is very good for everybody to visit, right? So Yeah, you get to know everything about the restaurant industry, left and right, new products, new things, and you get to meet everyone face to face. I know all of you since such a long time, but I've never met you actually. So this would be a great opportunity for all of us to sit and meet each other over there. It's for 5 days, so make sure you come for at least 2 days. It's a very, very, very big event. आपको 2 से 3 दिन लगेगा पूरा event visit करने में खाली. So with this, stay tuned with the webinar. We'll be back next week with another amazing webinar topic. And next month with Sarthak on, of course, an expansion and selecting the right location for your restaurants, maybe around it. Thank you, everyone. If you like the webinar, please to put in great contacts and feedback. And whatever you wish to give as a feedback, we always take it very positively. So, आप कुछ भी लिखेंगे, don't worry, we won't get offended. Thank you so much. Thanks, Sarthak. Have a great day. Thank you so much, your audience.